Hello everyone. So in this video lecture we will be discussing about preparation of alkyl halides from alcohols. Previously I discussed about halide exchange reactions in which we discussed two very important name reactions in halide exchange for preparation of alkyl halide और उनका नाम था Finkelstein and Schwarz reaction. These were very important reaction. Now let us move on to preparation from alcohols. Now what are alcohols? These are derivatives of hydrocarbons. The functional group of alcohols is OH. Let us see some examples like CH3OH. It is methyl alcohol. CH3 is the methyl part and OH is the alcohol part. So methyl alcohol. Other example is CH3, CH2OH, which will be ethyl alcohol or ethanol. Previous one would be methanol, IUPAC name if we have to see. Then another one would be, common name would be propyl alcohol, CH3, CH2, CH2, propyl and OH alcohol or propanol. Now you see here OH attached to carbon. Here also OH is attached to carbon which is attached to one carbon, and here also OH is attached to carbon which is also attached to one carbon. So all these examples are of primary alcohols. So here we are seeing the types of alcohols. So first type was the primary alcohol where OH is attached to carbon which is in turn attached to only one carbon. एक कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, so वो कार्बन होगा प्राइमरी. Now let us see another one. Here carbon is attached to two other carbons. C is attached to CH3 and CH3. So एक कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है, so वो सेकेंडरी कार्बन होगा और उससे जुड़ा अल्कोहल, इसलिए पूरा अल्कोहल हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल. OH is attached to secondary carbon, so complete alcohol is secondary alcohol. Another example, if you see, C is attached to 3C, three carbon से जुड़ा है, CH3, CH3 and CH3. So this is tertiary carbon. इस tertiary carbon से जुड़ा है alcohol का function group, so ये पूरा हो जाएगा tertiary alcohol. So these are the types of alcohols: primary, secondary and tertiary. We will study alcohols in detail, but here also we need to know what are the types of alcohols: primary, secondary and tertiary. We have to see preparation of alkyl halide from alcohols. So the very first reaction is using Lucas reagent. Using Lucas reagent we can convert alcohols into alkyl halides. Now what is Lucas reagent? So Lucas reagent is actually zinc chloride, which is an anhydrous form, and HCl together. Anhydrous ZnCl2, zinc chloride plus HCl. This is the Lucas reagent. Using this we can convert alcohol into alkyl chloride because here chlorine would be added. Alkyl halide का भी example alkyl chloride. Let us see the general reaction. ROH, that is any general alcohol, plus ZnCl2 plus HCl, which is Lucas reagent, and this will give directly replace OH from Cl. Okay, so it will give RCl. So this is very important reaction, especially Lucas reagent. You must remember, जहाँ भी Lucas reagent दिखे मतलब alcohol alkyl chloride में convert होगा. So let us see another example from this. Let us take ethyl alcohol, CH3 CH2OH, and HCl in presence of anhydrous zinc chloride. Anhydrous means it does not have water molecules in it, so it will just give CH3 CH2 Cl. OH would be replaced by Cl, and yes, byproduct form would be water. So this is very easy reaction as well as very important as well. OH is just simply replaced by Cl. So it's better that you remember this, and let us see the mechanism also of this, that how this is happening. So let us see how this reaction is happening. I'm taking this alcohol CH3 CH2OH, that is ethyl alcohol, ethyl part and alcohol part OH. This is the common name, and IUPAC name would be ethanol. So with this we will react Lucas reagent, HCl and ZnCl2, anhydrous. So what will happen? First we should know that between the bonds there are two electrons. In each bond there are two electrons present, right? Covalent bond sharing of electrons.
So what will happen, and also that oxygen always have lone pairs on it. You should remember this, and you should be able to imagine it even if it is not shown there. And HCl could be seen as H plus and Cl minus ion. So what will happen, ऑक्सीजन जो है वो उसके लोन पेयर H प्लस को दे देगा, और ऐसे करने से उसके पास प्लस चार्ज आ जाएगा. नाउ ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उस पर प्लस चार्ज बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है. ऑक्सीजन ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगा कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है. तो वो जो बॉन्ड है कार्बन और O के बीच में, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ लेके बाहर निकल जाएगा. So it will take these two electrons of the bond and will go out. Like this H2O will be formed. H of HCl and OH of the ethanol. H2O is formed. Now because of this, since the bond is gone, carbon के पास C plus charge आ जाएगा. So it is an intermediate, CH3CH2 plus. It is known as carbonium ion. This intermediate with carbon with plus charge is known as carbonium ion. अब इस कार्बोनियम आयन पे जो है Cl माइनस HCl का वो अटैक करेगा, क्योंकि Cl माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग. ऑल्सो दैट ये जो कार्बोनियम आयन है ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन है. प्राइमरी कार्बोनियम आयन बिकॉज प्राइमरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए Cl अटैक करेगा C प्लस पे, कार्बोनियम आयन के कार्बन पे, and then it will be formed alkyl halide CH3CH2Cl, which is actually alkyl chloride. Alkyl chloride is an example of alkyl halide. So this is how with the intermediate carbonium, primary carbonium ion, the product was formed. अब ये जो इंटरमीडिएट है ये रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिटरमाइन करता है. जितना ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा उतना ज़्यादा रेट जो है वो ज़्यादा होगा. कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी पे रेट डिपेंड करता है. मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, द मोर विड बी द रेट ऑफ दिस रिएक्शन. बिकॉज जितना ज़्यादा प्रोडक्ट स्टेबल होगा रिएक्शन उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगी. जितना ज़्यादा कार्बोनियम आयन स्टेबल होगा रिएक्शन उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगी. तो there are different types of carbonium ion and they have different stability. Let us see another example. Here I have taken CCH3, CH3 and OH and H. So here carbon is, this middle carbon is a secondary carbon and with this OH is attached. Why it is secondary? Because एक कार्बन से दो कार्बन जुड़े हैं, so बीच वाला कार्बन would be secondary. उसी से OH जुड़ा है, so ये पूरा हो जाएगा secondary alcohol. Now if you want to write its IUPAC name, it would be 1-methyl ethanol. Carbon with the function group will get the lowest number and highest priority, especially alcohol. So this will react with ZnCl2 and HCl. HCl, which is Lucas reagent. Let us write that HCl and ZnCl2, which is anhydrous. Anhydrous means it does not have water molecules. So HCl could be seen as H plus and Cl minus, and oxygen has lone pairs. Lone pair will go to H plus, or it will go out with the bond and positive charge would be developed on the carbon. So the intermediate would be carbonium ion CH3 and 1H and plus charge. So this is secondary carbonium ion, because जिस कार्बन पे चार्ज है वो एक secondary कार्बन है. So this is secondary carbonium ion. Cl will attack to this carbonium ion and the alkyl chloride would be formed. CH3, CH3, H and Cl. So this is the alkyl chloride is formed. This reaction is more fast than previous one because secondary carbonium ion is more stable than primary carbonium ion. Stability of carbonium ion is determined by alpha H. Secondary one has 6 alpha H, whereas primary carbonium ion has only 3 alpha H. जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उससे जो कार्बन जुड़े हैं वो अल्फ़ा कार्बन है, और अल्फ़ा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन जो है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन है. जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी. प्राइमरी कार्बोनियम आयन जैसे यहाँ मैंने ड्रॉ किया है, इसमें सिर्फ 3 अल्फ़ा एच है, वेयर एज सेकेंडरी में 6 अल्फ़ा एच. सो सेकेंडरी वन इज़ मोर स्टेबल. ऑल्सो अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट भी देखना चाहें तो
सेकेंडरी के पास 2 CH3 ग्रुप्स है, तो ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी वन। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो C+ को देगा, जिससे उसका प्लस चार्ज जो है वो थोड़ा न्यूट्रलाइज होता रहेगा। नाउ होमवर्क इट इज़ यू ट्राई टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस। हियर आई हैव टेकन वन टर्शियरी अल्कोहल, इट इज़ रिएक्टिंग विद द लूकास रिएजेंट। अगर वो लोग सिर्फ लूकास रिएजेंट भी लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मुलेशन क्या है, दैट इज़ ZnCl2 and HCl. So this is very important reagent, you should know its function and how it works. So this is homework, try to do it and form the product. Now let us see one more thing, rate of this alcohol towards लूकास reagent. कौन सा अल्कोहल लूकास रिएजेंट की तरफ कितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा? सो इट्स रेट इज़ टर्शियरी अल्कोहल, then secondary and then primary. Tertiary alcohol is most reactive towards Lucas reagent, then secondary and then primary. ऐसा क्यों? Because stability of tertiary carbonium ion is more than secondary and stability of secondary carbonium ion is more than primary. So tertiary carbonium ion is more stable, primary one is least stable. तो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन होगा उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो टर्शियरी अल्कोहल की ल्यूकास रिएजेंट की तरफ सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है। सो द सेकेंड वन इज़ द रिएक्टिविटी रेट, सॉरी द स्टेबिलिटी रेट, एंड द प्रीवियस वन इज़ द रिएक्टिविटी रेट। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अपने सवालों को हल करना है। बहुत रेयरली डायरेक्टली पूछेंगे थ्योरी क्वेश्चन की रेट लिख दो, बट इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यू हैव टू सी दिस कॉन्सेप्ट एंड सॉल्व योर क्वेश्चन। अपने आप जब आप मैकेनिज्म लिख के देखेंगे तो आपको और आसान पड़ेगा। प्रैक्टिस more and more questions and also try to write mechanism of the homework I